मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, NCR, and director kidney clinic. Today I'll be talking about polycystic kidney disease, जिसे ADPKD या autosomal dominant polycystic kidney disease भी बोलते हैं. So मैं आज आपको 7 points बताऊंगा, 7 facts about ADPKD. First is what is polycystic kidney disease. Second, what causes polycystic kidney disease. Third, how do I know if I have polycystic kidney disease. Fourth, is it curable or preventable. Fifth, what are the complications of autosomal dominant polycystic kidney disease. Sixth, can my children develop polycystic kidney disease. Seventh, what is the treatment currently available. First, we will start off with what is polycystic kidney disease, यानी polycystic kidney disease क्या है. तो polycystic kidney disease दो टाइप्स की होती है. एक जो बच्चों में पाई जाती है, which is there in children, it is called autosomal recessive polycystic kidney disease, and the other one that is found in adults, which is called autosomal dominant polycystic kidney disease. Today we'll be talking predominantly about autosomal dominant polycystic kidney disease. It is in fact the commonest inherited kidney disease that is there. अगर हम 1000 नॉर्मल लोगों को स्क्रीन करें, उनमें से एक को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज निकलेगी. और अगर 100 पेशेंट्स देखें स्टेज 5 किडनी डिजीज़ की, तो दो में जो स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से होता है. So it is the commonest inheritable cause of chronic kidney disease, जिसमें family history होती है. Second, what causes polycystic kidney disease? So ये polycystic kidney disease है, it is due to an abnormality or mutation in your genes. So there have been genes have been localized now. There are two genes that are involved. One is in chromosome 16, the other is in chromosome 1. There are very small number of cases where we still do not know what is the exact chromosomal localization, and it is inherited in an autosomal dominant fashion. यानी आपकी फैमिली में अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो 50% चांस है कि आपके बच्चों को होगा, या और आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी 50% चांस है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है. थर्ड, हाउ डू आई नो that if I have polycystic kidney disease. तो अगर आपकी फैमिली में polycystic kidney disease है, आप कैसे जानेंगे कि आपको भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है. There are genetic studies also available, but they are difficult to do. Samples हमें पेरेंट्स के चाहिए होंगे, बच्चों के चाहिए होंगे. A large number of samples are required, but a simple test would be an ultrasound or a CT scan. A CT scan can pick up these cysts at about 30 years of age, and an ultrasound can pick up these cysts at about 35 years of age. And there are criteria for this depending on the age and the number of cysts. They are called Ravin's criteria. So you will have to consult your doctor about the number of cysts that are there and whether they qualify for autosomal dominant polycystic kidney disease. Fourth, is it curable or preventable? The answer is absolutely no, because this is a genetic defect. आप इससे पैदा हुए हैं, आपकी जीन्स में ही खराबी है. इसको ना हम आज की डेट में ना हम क्योर कर सकते हैं, ना प्रिवेंट कर सकते हैं. बट इन टाइम्स टू कम देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन. देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड CRISPR टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन ऑल्टर द जीन्स ऑफ द पेशेंट्स, एंड आई एम श्योर अगले 10 सालों में हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी जिससे हम जीन्स को डिलीट कर सकते हैं और नॉर्मल जीन इंसर्ट कर देंगे थ्रू CRISPR टेक्नोलॉजी. बट एज ऑफ टुडे वी कैनॉट क्योर इट, वी कैनॉट इवन प्रिवेंट इट, बिकॉज ये आपके जेनेटिक डिफेक्ट है. फिफ्थ, what are the complications of autosomal dominant polycystic kidney disease? So complications can be within the kidney or outside the kidney. These cysts can be present in other organs also. बाकी organs में भी हो सकती है. तो पहले किडनी के बारे में बात करेंगे. किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, एंड देयर इज अ 70% चांस दैट यू विल डेवलप
chronic kidney disease, and which can progress on to stage 5 chronic kidney disease or end stage kidney disease. The outside the kidney, the complications can be in the heart in the form of abnormalities in the heart walls. It can be in the brain. You can have aneurysm, यानी dilatation of blood vessels in the brain, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है. You can have problems in your pancreas on the liver में cysts होते हैं, liver damage भी थोड़ा हो सकता है. And in the colon you can have diverticulum in the colon. So it is a multi-system disease, and usually these complications run in families. यानी अगर आपकी फैमिली में एन्यूरिज्म्स रही हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम रही है आपके पेरेंट्स में, तो और आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो आपको भी ये हो सकता है. सो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं किडनी में, और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बाकी ऑर्गन्स में भी. Sixth, can my children develop polycystic kidney disease? The answer is yes. जैसे मैंने बताया, it is inherited in an autosomal dominant fashion, जिसका simple words में जवाब है कि 50% of your children can develop autosomal dominant polycystic kidney disease. As of today, there is no definite way of predicting this polycystic kidney disease when the child is in the womb, यानी before birth, but 50% chance है कि these children. But in times to come, I'm sure technology is going to be available where we can do the amniocentesis and genetic analysis, and we'll be able to predict whether the child that you are giving birth to is having this abnormal gene or not. But today we cannot predict, and there's a 50% chance that your children can develop autosomal dominant polycystic kidney disease. 7, and the last one, what is the treatment? यानी अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, क्या आप दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं? क्योंकि ये बाय बर्थ है, ये सिस्ट शुरू में एक किडनी के छोटे हिस्से में होते हैं, धीरे धीरे सिस्ट बढ़ते हैं, और ये सारी किडनी को इन्वॉल्व करते हैं, इनका नंबर भी इंक्रीज होता है. तो एक तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट देखा गया था कि हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर का मतलब है 3.5-4 लीटर पानी कम से कम पिए. उसका ये इफेक्ट होता है कि जो किडनी में जो सिस्ट है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जो उनकी ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है. सेकेंड, एक नई ट्रीटमेंट आई है जिसे एक मेडिसिन का नाम है टॉलवैप्टन. इट इज़ अ यूनिक मेडिसिन जिससे सिस्ट में जो पानी इकट्ठा होता है, जिससे वो बढ़ते हैं, यानी सिस्ट में जो फ्लूइड सिक्रीट होता है, ये उसको टारगेट करती है. बट इट इज़ नॉट टू बी टेकन बाय एवरीबडी. एज ऑफ नाउ देर आर सर्टेन क्राइटेरिया एज टू विच पेशेंट्स कैन टेक टॉलवैप्टन्स. It is a lifelong treatment. It is a slightly expensive form of treatment, and it has its own side effects. There are two ways of looking at it. अगर आपकी किडनी का जो साइज वॉल्यूम है वो MRI में चेक होता है, या फिर किडनी का साइज अल्ट्रासाउंड में हम चेक करते हैं. If it is more than 16 centimeters, as of today, research suggests that you may be a candidate for tolvaptan therapy. However, it should be taken only under medical supervision, and as I mentioned earlier, it is a lifelong therapy. Regular tests need to be done and regular follow-up needs to be done. So to conclude, यानी एक समरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक इनहेरिटेड किडनी डिजीज है. इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनहेरिटेड किडनी डिजीज. इसको हम ना क्योर कर सकते हैं, ना प्रिवेंट कर सकते हैं. हाँ, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, आइदर बाय जेनेटिक स्टडीज और बाय अल्ट्रासाउंड, और स्टिल अर्लियर बाय CT स्कैन और MRI. इनके क्राइटेरिया होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिस्ट एंड द नंबर ऑफ एज एंड व्हाट इज़ योर एज. ये क्राइटेरिया आप डॉक्टर से मिलके, अगर आपको सिस्ट हैं तो आप ज़रूर उनसे मिलें और डिसाइड करें. इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किडनी में भी होती हैं और किडनी के बाहर भी होती हैं. किडनी में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम दैट वी सी इज़ chronic kidney disease,
हार्ट वॉल्स में abnormality होती है, ये रिस्क ऑफ स्ट्रोक भी होता है, and there is a risk of passing this disease on to your children. And after a long time we have now a treatment which cannot cure but it can slow the progression, यानी chronic kidney disease का प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं, किडनी की लाइफ बढ़ा सकते हैं इस दवाई से। इसका नाम टोलवेप्टन है। इट इज़ अवेलेबल फ्रीली इन इंडिया, बट इट शुड बी गिवन अंडर केयरफुल मॉनिटरिंग।